Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने आर्थिक मामलों के विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Consumer Price Index inflation jumps to 6.95% in the month of March. Domestic stocks declined more than 0.5%. Sensex closes below 58,600 points. Nifty ends below 17,550. Rupee weakens to trade beyond 76 rupees per dollar mark, and global share markets log losses. उपभोक्ता मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मार्च में बढ़कर 6.95% पर पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में आज हुई गिरावट, प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक लुढ़ के सेंसेक्स 58,600 के नीचे फिसला। निफ्टी भी 17,550 के स्तर से नीचे आया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ कमजोर, 76 रुपए के स्तर से ऊपर आया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रमुख शेयर बाजारों में हुई गिरावट। Consumer price-based inflation jumped to 6.95% in March from 6.07% in February, mainly on account of costlier food items, according to the government data released on Tuesday. The inflation in the food basket was 7.68% in March, up from 5.85% in the preceding month. Sharad, this is the third straight month in which the inflation measured by the Consumer Price Index has clocked above the RBI's upper end of tolerance band. And this is a serious matter. Well, it is serious, undoubtedly, and I think we are witnessing a phenomena which is across the world. So we are no exception. That's a slight relief that we are all riding the same boat, as they say in English. So I think quite expected, and I attribute this rise primarily to the fuel prices. Although if you see the inflation data more minutely, you will find that the prices of fuel and electricity, I mean in percentage terms, hasn't increased as much. Maybe because the fuel price started in the month of March, around 22nd or 23rd of March. So the effect of the fuel price rise in the fuel index is not showing as much. And Rajesh, even before we proceed in this discussion, I would like to bring a very key point here, which I have been talking on different platforms about this thing, that the proportion of fuel rise and the proportion of especially the food items, if you compare the two rise, and when we as economists, when we go into the detailed calculations, it is clearly evident, and I think the numbers today has vindicated my stand, that there are some middlemen, there are some, I would say, unscrupulous elements, who are trying to take advantage. And when you go to a shop, when you go to buy something, when a consumer goes, and what he hears is, "Saab piche se महंगा आ रहा है, साहब क्या करें, पेट्रोल प्राइस बढ़ गया, डीजल प्राइस आप देखिए बढ़ गया," even though the stock lying with him may not have been impacted, it may have been bought prior to the fuel rise, exactly. But he wants to make profit. So my recommendation as an economist here is that maybe the government should consider regulating these supply chains, so that might help in curtailing inflation, because there is a saying in Hindi, and I think Manoj will also relate to this, that Behti Ganga mein haath dhona. So I think some people are trying to take undue advantage, and they are making the price jump more than proportionate times than the fuel price jump. So this is more a moral standard that you're talking about. Yes, and also people take advantage of the dumping. They tend to store goods, and what they know that the price is on the upward side, so they store goods. They create artificial shortage,
And we've seen, lemons were one of the victims, if you remember. I mean, the lemon selling at 300 or 400 rupees kg. Now, there's no extra fuel which has gone and stuck onto a lemon. Just that there were some stockists who took advantage. Obviously, in summers, there is shortage of lemon, no doubt. But then not as much that it can take the price to 300 or 400 rupees a kilo. So there's no special diesel which has been, or probably I was joking to somebody that probably people are selling lemons dipped in diesel or what? Because I think some people are definitely trying to take advantage of the situation. शरद जी, जो आसार हैं उसमें जो ईंधन पदार्थों के दाम है वो आने वाले दिन में कम से कम अपने यहाँ बढ़ेंगे, ऐसी संभावना कह लें, आशंका कह लें हैं, उसमें जो आपूर्ति संबंधी बाधाएं आप कह रहे हैं, जहां सरकार को सख्त कदम उठाने की सलाह आप दे रहे हैं, इसके अलावा और क्या उपाय हो सकते हैं जिससे जो उपभोक्ता मूल्य में और थोक मूल्य में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो मंडी में थोक मूल्य है उनकी तुलना में एक ही नगर में उपभोक्ताओं के अलग अलग शहरों में या स्थानों पर मूल्यों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, और कई प्रकार की खाद्य सामग्रियों में, न केवल कह लें कि जो ब्रांडेड सामान है उसमें, बल्कि अन्य तरह के सामानों में भी, वहां क्या निदान निकल सकता है? देखिए मनोज, इसमें दो बातें हैं। पहली जो आपने पहले बात बोली कि आने वाले समय में ईंधन पदार्थों के मूल्य और ऊपर जाएंगे। अब आज आपने क्रूड की प्राइस देखी तो सुबह $100 के आसपास घूम रही थी, बाद में थोड़ी ऊपर नीचे होती रही। और जहां तक फ्यूल प्राइस राइज जो हमें डेली पीछे देखने को मिल रहा था 16 दिन में 14 बार वगैरह वगैरह, वो भी अब 2-3 दिन से आपने देखा कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है जो अंडर रिकवरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो रही थी, काफी हद तक वो उसको कवर कर, पूरा तो नहीं कवर किया है, पर काफी तो सरकार संवेदनशील है इस बात से कि ये बेतहाशा नहीं बढ़ सकती है। अब मैं आपके प्रश्न पर अगर सीधा सीधा आऊं कि जो लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं इस सिचुएशन का, और आपको जो होलसेल, हालांकि होलसेल हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है और जो उसका कॉम्पोजिशन होता है वो भिन्न भिन्न होता है, एक जैसा नहीं होता है। होलसेल में मैन्युफैक्चर्ड आइटम ज्यादा आते हैं, जबकि कंज्यूमर में और बहुत बास्केट ऑफ गुड्स डिफरेंट होती हैं, तो कुछ आपको वहां फर्क दिखता है। पर हां, मैं ये जमाखोरी और जो गैर जायज तरीके से मुनाफा वसूली की जाती है, जो लोग इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जेबों को नुकसान पहुंचाते हैं, और जिसकी वजह से सरकार को आलोचना, किसी की गलती की वजह से आलोचना सरकार को सहनी पड़ती है। लोग आप दुकान पे जाके सरकार को दोष दे देते हैं। मुझे इसीलिए मैंने ये सलाह दी अभी जब मैं राजेश से आपसे पहले बात कर रहा था कि सरकार को इन सप्लाई चेन्स को रेगुलेट करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाना चाहिए कि जब माल बन के फैक्ट्री से चलता है या सब्जी खेत में से जब निकलती है और जिस समय तक वो उपभोक्ता के यहां उनके किचन में, उनके घर में पहुंच नहीं जाती, उसको शैडो करना चाहिए। हमेशा की जरूरत नहीं है, पर ऐसे हालात में जहां महंगाई आज 6.95% निकल के आई है, मुझे लग रहा है इस कदम से ऐसा मेरे को एहसास हो रहा है, और मैं इसको तजुर्बा भी कर चुका हूं और मैं आंखों से देख भी चुका हूं, तो मुझे लग रहा है कि इससे काफी हद तक ये परसेंटेज मॉडरेट हो सकती है। Since we were talking about oil, let's tell you that the oil prices today climbed around 4% on easing concerns about demand in China after Shanghai relaxed some COVID-19 related restrictions. The crude prices also rose after OPEC warning that it would be impossible to increase output enough to offset lost Russian supply. In intraday trade, Brent crude was trading at $102.30 per barrel, while WTI crude prices were at $97.90 per barrel. Also, that India has achieved yet another milestone in the context of intellectual property innovation ecosystem, as the number of domestic patent filing has surpassed the number of international patent filing at Indian Patent Office for the first time in the last 11 years. A total of 19,796 patent applications were filed, out of which 10,706 were filed by Indian applicants against 9,090 by non-Indian applicants in the quarter January to March 2022. Sharad, this speaks highly about domestic expertise that which will take India towards self-sufficiency soon in every area. Well, when you were speaking the numbers, Rajesh, it reminded me of the Prime Minister's slogan which he gave, vocal for local. And I think the whole concept of brand building is where IPR originates from, or shall we say it leads us to IPR.
So I think Indian market was known for lagging behind in the years that have gone by. They were known for lagging behind on the intellectual property rights. And today, I think the Indian innovations, the Indian inventions, the Indian concepts are, on the verge of becoming global brands. So in that situation, it is extremely important that intellectual property rights should be filed. That is why we are witnessing. I think the Indians have now started getting worried that we can be copied, we can be, infringed, the intellectual property rights can be breached, which is why you're witnessing this upsurge in the patent filing, Rajesh. Okay, since we were talking a while back about inflation jumping to 6.9%, will this have any repercussions on the RBI's policy when they meet next? Well, RBI, if you ask me, if you heard the commentary of the RBI Governor, Mr. Shaktikant Das, a few days ago, I think RBI has prioritized inflation over growth. He primarily mentioned three things. He said inflation, number two, in that order, in that sequence. Number two is growth. Number three is financial stability. So putting inflation on the top, I think remains RBI, but we need to understand economics here better. There are two kinds of inflation. There's a cost push inflation and there's a demand pull inflation. This inflation is unfortunately not demand pull inflation. We are not witnessing a bumper demand of things. Obviously, the economy has come back on track. Things are getting back to normal. But because this inflation is cost push inflation, therefore RBI's measure of increasing the interest rates, Rajesh, you are seeing RBI is holding back. Although it did say that from ultra accommodative, we want to move to accommodative. So we might see some movement maybe on reverse repo or something, but then it will not be as aggressive as you normally witness in case of high inflation, Rajesh. यदि हम वैश्विक धरातल पर बात करें तो दुनिया भर में मुद्रास्फीति की आशंकाएं देखी जा रही हैं. अपने यहाँ की स्थिति, जैसा आपने कहा कि जो हमारा लागत है मांग की तुलना में जो लागत मूल्य है उसके चलते मुद्रास्फीति में बढ़त हो रही है. तो यहाँ पर जो यानी भारतीय रिजर्व बैंक है उसका स्टांस रहा है कि स्थिति को देखते हुए हम एक यानी उचित उपाय कर सकते हैं बीच में भी. क्या ऐसे आसार लग रहे हैं कि जो स्थितियां हैं उसमें बीच में भी कोई कदम उठाए? देखिए, अगर वैसे तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, मनोज, हर 2 महीने बाद होती है, साल में 6 बार मिलते हैं. तो बहुत ज्यादा 2 मीटिंग से बीच में गैप इसी वजह से नहीं रखा जाता है क्योंकि सिचुएशन बहुत डायनेमिक होती है, बदलती परिस्थितियां होती है जिसके अनुकूल निर्णय लिए जाते हैं. तो मुझे लग रहा है आरबीआई बहुत नजदीकी से नजर रखे हुए इस पे, और अगर ये इन्फ्लेशन यहां से और ऊपर जाता है और ऐसे लेवल पर चले जाता है जैसा कि अमेरिका में हम 8% से ऊपर देख रहे हैं, अगर कुछ ऐसा जाता है तो हो सकता है आरबीआई कोई ऐसा निर्णय ले. पर मेरा ऐसा फिर भी मानना है कि यहां पर वो जो टूल होता है, ब्याज बढ़ाने वाला जो टूल होता है आपको, क्योंकि ओवर हीटेड इकोनॉमी का वो सिम्टम होता है, यहां पर कुछ ओवर हीटेड जैसी अभी बात नहीं है. बल्कि आरबीआई ने तो ग्रोथ के आंकड़े, अगर आपने कमेंट्री सुनी हो, 7.8% से घटा के 7.2% कर दिए थे. तो एक तरफ अगर आपकी ग्रोथ नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, तो फिर ये ब्याज अगर ऐसा होता तो आपको इस कमेंट्री में ब्याज बढ़े दिखते इस पॉलिसी जो अभी हाल में आई है. परंतु ऐसा नहीं हुआ. उसका कारण ये था कि ये कॉस्ट यही इंडिकेट करता है कि जो आपने कहा लागत बढ़ाने वाली इन्फ्लेशन है. इनपुट कॉस्ट मेटल्स की ले लीजिए, क्रूड की ले लीजिए, किसी भी आप आइटम की ले लीजिए, आप गाड़ियों के बनने वाले सामान का ले लीजिए, आप जिसका मर्जी लीजिए, वहां पर इनपुट कॉस्ट. और मेरा बार बार ये मानना है और मैं आज इस बात पे जोर देके बोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो सरकार में निर्णय जहां पर लिए जाते हैं वहां तक मेरी ये सलाह पहुंचे कि ये जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और सिर्फ ये सुन के, मान लीजिए आप कुछ बेच रहे हैं, आपने सुना पेट्रोल डीजल बढ़ गया, पर आपका सामान तो रीजनेबल कॉस्ट पे आया हुआ है. आपने सुना, आपके पास ग्राहक आया, ग्राहक को आपने कहा ये लीजिए साहब, आज 5 रुपए फालतू मिलेगा. भैया पीछे से महंगा आ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें देखिए. मुझे लग रहा है उस चीज पे सरकार को बहुत जल्द ध्यान देना चाहिए. मेरा ऐसा अपना अनुमान है मनोज कि अगर ऐसा किया जाए तो ये जो 6.95% आज आपको दिखी है, शायद ये इससे बहुत कम दिखाई दे असल में. Okay, RBI and Fed, if we were to look at them, and if RBI was to emulate whatever Fed is doing, then if we also take a hawkish stand, as you said, RBI has to do something, then would we also not be facing something like the fastest pace of inflation in 40 years? Well, Rajesh, a very interesting case in point, I must say, which you raised.
See, there is a difference here. If you look at the economic policies or the monetary policies of both the countries, the reason why Fed became hawkish was because $7 trillion was pumped in the American economy. And not many people know that a lot of that was printed currency. So $7 trillion pumped into American economy. So what is happening in America right now, Rajesh, this is where the difference is. That there is more money chasing lesser number of goods. Obviously, there is a cost push inflation in America also. Look at the fuel prices in America have gone up by 50%. There is a cost push inflation, but more effect is because of more money chasing lesser amount of goods, because America is a developed economy. And the moment you have more money chasing, you suddenly find the prices shoot up, and they are seeing a 40-year high. The case in point in India is slightly different. Here we are witnessing the crude oil price rise. We are witnessing cost push inflation, because in India the liquidity was basically pumped in the form of credit, and it reached, for example, MSMEs. It reached some individuals also, but it wasn't, pardon me for using this word, it wasn't as badly pushed through as it was pushed in America. So I think America is suffering from inflation. Common factor of crude is there in both. But apart from the crude, I think if you deep dive into the whole concept, you will find that the reasons for inflation in India and the reasons for inflation in America are significantly different. So liquidity management holds the key. Absolutely. In America, it holds in India also. And I think the RBI governor said that we need to probably move the stance from ultra accommodative to accommodative. Yeah. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़। घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोरी के संकेत पर लगातार दूसरे सत्र में बाजार में गिरावट हुई। सेंसेक्स 58,600 के नीचे आ गया, निफ्टी 17,500 के स्तर से फिसल गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 388 अंक यानी 0.66% घटकर 58,576 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 145 अंक यानी 0.82% की कमी लेकर 17,530 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.4% का नुकसान हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.47% नीचे आ गया। The Sensex and the Nifty today fell more than 0.5%. Both stock indices declined for the second session in a row amid negative cues from global markets. The BSE Sensex closed below the 58,600 mark, while the NSE Nifty ended below 17,550 level. The Sensex plunged 388 points, or 0.66%, to finish at 58,576. The Nifty also tumbled 145 points, or 0.82%, to settle at 17,530. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices underperformed the Sensex. The mid-cap fell 1.45% and the small-cap index ended 1.47% down. In the Sensex pack, 9 companies logged gain while 21 declined. Axis Bank gained the most as it rose 1.7%, followed by Kotak Bank, which added 1.1% each. Power Grid climbed 1%, Maruti gained 0.7%, and ICICI Bank ended 0.6%. On the other hand, Tata Steel lost the most as it slipped 2.8%, followed by Tech Mahindra, which fell 2.3%. Wipro and Airtel both declined 2.2% each, while Reliance and Larsen & Toubro both fell 1.9% each. In the sectoral indices at BSE, all indices fell except BankX, which gained 0.5%. Energy Index tumbled 2.8% and Realty ended 2.7%. Oil and Gas Index plunged 2.5% and Basic Material closed 2.2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,110 companies gained while 2,316 fell. Shares of 90 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर हुआ, 76 रुपए 14 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.12% की बढ़त के साथ
100.05 पर चल रहा था। शरद जी, पहले तो घरेलू बाजार पर प्रतिक्रिया लगातार दूसरे दिन हम गिरावट देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लग रहा है ये जो गिरावट है ये इम्पोर्टेड है और जितने भी आर्थिक पैरामीटर होते हैं मार्केट के संबंध में, आप उसमें बॉन्ड यील्ड देखें 2.8%। बहुत समय से हमने ऐसी बॉन्ड यील्ड अमेरिका में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड होती है वो नहीं देखी। उसके अलावा आप डॉलर इंडेक्स देखें, सेंचुरी मार रहा है डॉलर इंडेक्स। तो मुझे लग रहा है बास्केट ऑफ 6 करेंसी से डॉलर इंडेक्स बनता है और ये जो बॉन्ड यील्ड का बढ़ना है ये डॉलर इंडेक्स पे असर सीधा सीधा डाल रहा है, क्योंकि जो अमेरिका के निवेशक हैं जब उनको अपने घरेलू मार्केट में इतना अच्छा रिटर्न मिलता है बॉन्ड यील्ड का तो पैसा निकालते हैं और हमें इसीलिए रुपए पे भी समय समय पर प्रेशर बनता दिखता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आरबीआई करेंसी स्वैप्स ना करे तो आज आपको रुपया 80 से ऊपर दिखाई देगा। तो आरबीआई ने रुपए को संभाला हुआ और बड़ा अच्छा हमारा जो फॉरेक्स का रिजर्व है वो अभी भी $600 बिलियन से ऊपर का है। हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने धड़ल्ले से पैसा निकाला है, 1 लाख करोड़ से ऊपर मेरे ख्याल इसी साल में निकाल चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। तो उसको इतना निकालने के बाद भी रुपया अपनी जगह 1-2 रुपए छोड़ दें अपनी जगह जमा हुआ है, तो इसमें आरबीआई की प्रशंसा करनी चाहिए, आरबीआई के एफर्ट्स की वजह से रहा है। और जहां तक स्टॉक मार्केट पे अगर वापस आए और उसकी बात करें, मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी हाल में जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास अमेरिकन मार्केट्स का मिनट टू मिनट अपडेट रहता है और मुझे मेरी घड़ी पे और मेरे सामने फ्लैश होता रहता है। तो उसमें आप देखें तो डाउ में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। मार्केट बहुत इमोशनल है। मार्केट को अमेरिका में कहीं लगा कि जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे शायद वो हमारी उम्मीद के हिसाब से आएंगे, तो इतना इमोशनल है। चलिए अब डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट, हालांकि बहुत कम श्रोता जानते हैं कि अमेरिकन मार्केट 24 घंटे चलता है, रात को तो खुलता ही खुलता है, पर जो डाउ फ्यूचर्स है उसकी ट्रेडिंग 24 घंटे कहीं ना कहीं होती रहती है। जैसे हमारा एसजीएस निफ्टी है जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, वो हमारी मार्केट खुलने से पहले ट्रेड हो जाता है। तो अभी भी 200 पॉइंट्स के आसपास की आपको डाउ में उठान दिख रहा है, जिसका कारण है कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जो वहां महंगाई के आंकड़े आए वो इतने ज्यादा चौंकाने वाले ना हो जैसे हम उम्मीद कर रहे थे। हेडलाइन कमेंट्री शायद उस, हालांकि अभी आंकड़े आएंगे तो पता लगेगा एग्जैक्ट पोजीशन। बहुत सेंसिटिव है मार्केट मनोज, बहुत इमोशनल है। मैं तो एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा इमोशनल मानता हूं, छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी खुश हो जाता है, बहुत जल्दी नाराज भी हो जाता है। बाजार में जो अभी की स्थिति है उसमें जो हमारे निवेशक हैं, छोटे कह लें कि आम श्रोता हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे अभी का जो स्तर चल रहा है वहां? मनोज, बहुत अच्छा सवाल है। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, जो लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको तो सवार हो जाना चाहिए, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब जब डिप आए, मैंने पहले भी आपके शो में बहुत बार ये सलाह दी कि वो एसआईपी करके थोड़े थोड़े करके शेयर्स लेते रहें जब जब मार्केट करेक्शन दिखाती है। पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मिड टर्म ट्रेडर्स हैं, मैं समझता हूं उनको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को सेटल डाउन होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है। बीच में बुलिश लगने लगा था, फिर उसके बाद करेक्ट, जब मार्केट बुलिश दिखने लगता है तो आप देखते हैं अगले कुछ दिन तक उसमें गिरावट आ जाती है। तो मैं समझता हूं जब तक रशिया यूक्रेन का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कोई भी मार्केट दुनिया का, आप एक जगह दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो, फुल फ्लेज लड़ाई चल रही हो, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट एक कॉन्स्टेंटली 1 महीना तक आपको ऊपर जाता देखेगा। जब जब वहां से कोई खबर आएगी, और उसकी वजह से आप देखिए आर्थिक पैमाने कितने उतार चढ़ाव में हैं। तो मैं समझता हूं मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, थोड़ा सोच समझ के फूंक फूंक कर पग धरना चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं। आपने कही फूंक फूंक कर पग धरना, यहां पर हम वैश्विक परिस्थितियों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। क्या दुनिया 2 धड़े में बंटती या आगे बढ़ती नजर आ रही यूरोप संकट की वजह से? बिल्कुल नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे और जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो पक्ष बनते हैं, बिल्कुल, और मैं आपको हैरानी होगी, हालांकि हम दर्शकों को यहां कहीं भी डराना नहीं चाहते, मैं बिल्कुल पैसे में मैंने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ी, और कुछ जब वहां भी ऐसा ही शुरू हुआ था, पक्ष बनते गए, हम उसकी साइड, हम उसकी साइड, जी हां बनते जा रहे हैं, पर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और ये पक्ष खाली पक्षी बन के रह जाएं और आगे इनका कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर नजर डालते हैं एशियाई बाजार पर, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। एक और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से हांगकांग का हैंग सेंग 0.5% लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में लगभग 1.5% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% नीचे बंद हुआ। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.8% लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1% की गिरावट हुई।
यूरोपीय बाजार पर नजर डालें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां बिकवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों 0.6% नीचे चल रहे थे। जर्मनी का डेक्स भी 0.9% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। The three major U.S. stocks fell yesterday ahead of release of crucial inflation data, which is rising at its fastest pace in 40 years. Investors also shifted from stocks to bond markets as bond yields in the U.S. are at multi-year high. Investors are worried that due to rising inflation, U.S. Central Bank may hike interest rates in the next policy meeting, which will suck liquidity from the share markets. The Dow Jones Industrial Average Index fell 1.2% and the S&P 500 declined 1.7% and the Nasdaq Composite tumbled 2.2%. Two questions. One about Fed minutes have spooked everyone all across. Yeah. And they have said that when it comes to inflation, they are on its case. That's one. The second is about the policy meeting. This is going to suck the liquidity from the share markets completely. That's how the market is looking at it. What is your view? Well, I think the Fed has very clearly indicated that it wants to, make the balance sheet more thin. The hefty balance sheet, the $7 trillion I spoke of, I think that is too much of money chasing too fewer goods. So I think sucking the liquidity is an indispensable move which Fed would have to take at some point. And yes, you're right. I mean, temporarily, Rajesh, it does affect the market. But over a period of time, I think people realize you cannot compare market returns with bond market returns in the long run. 2.8% versus, let me not even speak of a percentage. I think they're not even comparable. So it could be a temporary phenomenon. This inflation, which is as high as we are looking at now, and they're saying it's a 40-year high. Yeah. Historically, such situations lead to crunched corporate spends. It does. It does. It What checks is investment on as the well. anvil for the U.S. market? Absolutely. I think U.S. is in for a tough economic situation. It will be side effects of the mega liquidity which was pumped into America during the pandemic. I think the side effects or the pains would now be felt and they have to be put. Just like COVID gives you after COVID effects, now liquidity will give you after liquidity effects, Rajesh. What's the way out? Well, way out is just suck it out and bear the pain. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और चलें सराफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी तेजी दिखी है। जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में 580 रुपए उछलकर 52,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी भी 1,075 रुपए की बढ़त के साथ 68,370 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। वैश्विक बाजारों में ध्यान दें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में समाचार तैयार किए जाने तक सोने का मूल्य मजबूती के साथ $1,967 30 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी थोड़ी सी बढ़त के साथ $25 30 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। बहुत संक्षेप में शरद जी, चांदी सोना किस दिशा में जाता दिख रहा? बहुत संक्षेप में तो मनोज, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि सोने के साथ सोना चाहिए और सोने में थोड़ा बहुत निवेश 10 से 15%, बल्कि 20% तक भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। जो वैश्विक परिस्थिति है उसमें मुझे लग रहा है सोने के साथ सोने में कोई हर्ज नहीं। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us, Thank you Sharad. so much. And before we close the headlines once again, consumer price index inflation jumps to 6.95% in the month of March. Domestic stocks declined more than 0.5%. Sensex closes below 58,600 points. Nifty ends below 17,550. Rupee weakens to trade beyond 76 rupees per dollar mark, and the global share markets log losses. That's all we have in this edition of Market Mantra. Until tomorrow, goodbye. Market Mantra.